Hello and welcome to Strive Dialogues. Today we are going to discuss China. China, we are doing a series, as you all are aware, with Brig RK Bhatia, and this is focused more for our in-service officers who are going to appear for various entrance examinations, competitions, etc. ऑल्सो ये बेनिफिट करेगा दूसरे लोगों को भी जो कि चाइना में इंटरेस्ट रखते हैं उसकी हिस्ट्री से हमारी जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स की हिस्ट्री है उससे अगर कोई इंटरेस्ट है उनको तो ये उनका एक बैकग्राउंड नॉलेज बढ़ाने का काम करेगी और साथ ही साथ हमने इसको थोड़ा करंट भी रखा है जिसमें कि जब हम एक बार बॉर्डर डिस्प्यूट्स को कवर कर लेंगे तो हम आगे क्या रास्ता है इसको रिजॉल्व करने का इसको इस सॉल्यूशन पाने का या इस बॉर्डर डिस्प्यूट का जो किस तरह से हम इसको सुलझा सकते हैं उसका भी वी हैव डन अ लिटिल बिट ऑफ स्टडी ऑन दैट आल्सो एंड वी हैव सजेस्टेड सम ऑप्शंस हो सकता है ये ऑप्शंस अभी वर्क ना करें या इस पे काफी डिबेट भी हो सकती है लेकिन ये कुछ हमारे सामने विकल्प हैं दीज आर सम ऑफ द ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ अस and all those people who are interested in attempting such question if it comes either in the current affairs or in TAC etc they can look at it from this perspective and select these options for their answers. I am sure with the logic which we are going to give they will uh, they will find it very very handy. So with that I would also like to say that China has resolved its border disputes with almost all the countries except India and Bhutan. Of course, there are some simmering differences still existing in some other countries like over Vladivostok in as far as Russia is concerned, although it is settled on paper, but there are differences which occur. But by and large, the basic differences are between India and China and between Bhutan and China. So essentially, आज का जो डिस्कशन होगा दैट विल फोकस ऑन हाउ व्हाट आर दीज डिस्प्यूट्स एंड हाउ कैन वी रिजॉल्व देम क्या आंसर इसकी हिस्ट्री में लाई करता है या ट्रेडिशंस में लाई करता है या जियो इकोनॉमिक्स में लाई करता है या जियो पॉलिटिक्स में लाई करता है दोनों कंट्रीज के बीच में वेयर इज द आंसर एंड हाउ कैन यू फाइंड अ lasting solution on the face of it looks that till the time Xi Jinping is there the solution will keep uh, keep us alluding in fact we may not be able to find some solution but as they say where there is a will there is a way. Let us go ahead and see what Brigadier Bhatia has in store for us as far as today's topic is concerned. Over to you, Brigadier Bhatia. And also before we forget, I would like to inform all our audience that हमने एक नया फीचर इसमें शुरू किया है आज के बाद से वो ये है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं जो हमारे कमेंट बॉक्स में व्यू कर रहे हैं हम उसमें से किसी एक लकी व्यूअर को सेलेक्ट करेंगे और अगर वो अपना ईमेल लिंक हमारे इस चैट बॉक्स में डाल देंगे तो हम उनको अपनी स्ट्रीम यार्ड की लिंक भेजेंगे जिससे कि वो अपना क्वेश्चन लाइव पूछ सकते हैं हमारे गेस्ट से या मुझसे जो मैं होस्ट हूँ जनरल दुष्यंत और ब्रिगेडियर भाटिया जो है आज हमारे गेस्ट हैं जैसा कि आप जानते हैं ये चौथी बार हमारे प्रोग्राम में आ रहे हैं और बहुत अच्छा सीरीज कर रहे हैं सो व्यूअर्स बी रेडी पुट इन योर कमेंट्स एंड ऑल्सो गिव योर ईमेल if you want to come live on our show and ask the question live with us. Okay, over to you, Brigadier Bhatia. Thank you very much, sir. Start continuing with the series on China. आज का हमारा टॉपिक है कि इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है हम पहले देखेंगे कि ये बॉर्डर डिस्प्यूट क्यों है, कहाँ है और किस तरह से इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं. ये हमारी सोच है. This may not be feasible at all, or maybe that it can be the starting point for resolution of the border. जहां तक इंडिया और चाइना का सवाल है, टोटल दुनिया की 37%, 37% of the world population is in these two countries. These two countries occupy 9% of the geographical area of the world, and
consumes 20% of the energy of the world. अब इसमें ये दोनों कॉपरेट कर सकते हैं या कन्फ्लिक्ट में जा सकते हैं या कंपटीशन कर सकते हैं. अगर ये कॉपरेट करते हैं तो पूरी वर्ल्ड को ये एक साथ ले जा सकते हैं, जहां पर कि फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड द बैक ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड कैन कैरी द इंटायर ग्लोब विद देम. अगर ये बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व करते हैं तो क्या ये मधुमक्खी का छत्ता है, इज इट ए बी हाइव, कि दोनों ने अगर इसको छेड़ा तो हो सकता है कि अपने को नुकसान होगा. कैसे नुकसान हो सकता है या कैसे फायदा हो सकता है, ये हम as we progress we will see. सबसे पहले इंट्रोडक्शन के लिए इंडिया और चाइना का जो टोटल डिस्टेंस है वो तकरीबन 3,500 किलोमीटर है, जिसमें से 3 सेक्टर्स के अंदर इसको डिवाइड किया गया है फॉर इजी रेफरेंसेस. वी कॉल इट द वेस्टर्न सेक्टर, जो हमारे ईस्टर्न लद्दाख के अपोजिट पड़ता है. इसका टोटल लेंथ इज अबाउट 1,570 किलोमीटर्स और टोटल एरिया इसका तकरीबन 33,000 स्क्वायर किलोमीटर है. सेंट्रल सेक्टर जो कि 545 किलोमीटर है और हिंदुस्तान की हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड एरिया में ये एरिया पड़ता है इसका, और टोटल एरिया इसका इज अप्रोक्सीमेटली 2,000 स्क्वायर किलोमीटर्स. एंड देन वी गो डाउन राइट अप टू इन द ईस्टर्न पार्ट where we have dispute with China in Arunachal. So total area जो इसका है that includes Sikkim but excludes Bhutan is approximately 1,325 kilometer of LC and total area is approximately 90,000 square kilometers. So ये मोटा मोटा हम समझ गए हैं कि ये कहाँ पर ये dispute है. अब ये dispute क्यों है? ये डिस्प्यूट का मेन रीजन है कि जब अंग्रेज पहली बार हिंदुस्तान में आए तो उन्होंने हमारे को नेशन स्टेट का कंसेप्ट समझाया जिसमें बाउंड्रीज बनी. इससे पहले क्या होता था कि राजे महाराजे कोई किसी की ट्रिब्यूटरी रहता था, कोई वैसल स्टेट रहता था, किसी के ऊपर हमला होता था. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज वो ऐसा एरिया जहां पर कोई इंसान नहीं जा सकता, जिसको कि हम नो मैन्स लैंड कहते हैं, जहां पे दोनों कंट्री से कोई बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं था. तो ग्राउंड के ऊपर कोई बाउंड्री मार्क नहीं की जाती थी ऐसे एरियाज के अंदर. इट वाज अ जनरल कंसेप्ट. Bhatia, I would like to intervene here just to tell the audience कि ये नेशन स्टेट होती क्या है. नेशन स्टेट ये कॉन्सेप्ट आया यूरोप से, जब ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद. और इसमें क्या हुआ कि यूरोप जो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, इसको फाइनली रीऑर्गेनाइज किया ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ पीपल ऑफ similar entity, similar culture, similar ethnicity were grouped together and made into a state. So when a state and the people are of the same boundaries, that means state की boundary और उसमें रहने वाले लोगों का जो कल्चर और एथनिसिटी है वो एक है, तो वो नेशन स्टेट कहलाता है. अगर इसमें फर्क है, यानी कि किसी स्टेट की बाउंड्री में नेशन, अलग अलग नेशंस रह रहे हैं, जैसे मैं इंडिया की बात करता हूं, तो अगर आप इंडिया की जो स्टेट है वो काफी बड़ी है, लेकिन इसके अंदर कई छोटे छोटे नेशंस हैं. तो इंडिया इज एक्चुअली अ स्टेट. जिस दिन ये सारे जो लोग इंडिया में जो रह रहे हैं वो एकजुट हो जाएंगे, दे विल बी कंसिडर्ड एज इंडियंस, then it will become a nation state. So as of now, we are tending toward the nation state, but we still have a number of smaller nations. और इनकी जो ओरिजिन हुई है ये राजा रजवाड़े और ये जो बात कर रहे हैं ब्रिगेडियर भाटिया, उससे हुई है कि मणिपुर की अलग स्टेट हुआ करती थी, हैदराबाद की अलग स्टेट हुआ करती थी. इन सबको जोड़ करके हमने एक स्टेट बनाई, लेकिन पहले नेशन स्टेट्स अलग अलग थी हमारे इसमें भी. तो ये एक डिफरेंस है. तो हमारा जो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि नेशन होता है, एक स्टेट होती है और एक नेशन स्टेट होती है. इंडिया इज अ नेशन स्टेट एज ऑफ टुडे, राइट. जस्ट टू एक्सप्लेन टू यू ऑल कि ये कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट है क्या. और इसका इसका एक चार्ल्स टिली जो है, उनकी किताब है, उसको अगर आप पढ़ेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है. दिस इज गुड फॉर द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन. ओके, गो अहेड. So
जैसे सर आपने बताया, ये अलग अलग स्टेट्स थी, कोई किसी को अटैक करता था, कोई किसी के ऊपर इन्फ्लुएंस डालता था, उसकी वजह से ये बाउंड्रीज जो है जो वो भी फ्लक्चुएट करती रहती थी। कभी किसी के पास ज्यादा स्टेट आ जाती थी, किसी के पास कम स्टेट आती थी। और अगर कोई ट्रीटीज हुई भी पास्ट में तो वो बहुत वेग उनके अंदर वर्डिंग्स थी, उसकी उसका कोई स्पेसिफिक नहीं था, ग्राउंड के ऊपर कोई नहीं गया था, उसको ग्राउंड के ऊपर चेक नहीं किया गया था। उसकी वजह से क्या हुआ, उसके अंदर एम्बिग्विटी आ गई, उसके अंदर एक इस तरह की चीजें आ गई जिसको किसी भी तरह से इंटरप्रेट किया जा सकता था, जो कि सेलेक्टिव रीडिंग। अब मैं अगर किसी चीज को पढ़ना चाहता हूं तो मैं अपने आइडिया से उसको पढ़ रहा हूं जिसमें मेरे को फायदा हो रहा है, क्योंकि वो स्पेसिफिक नहीं थी। और हमारी एक दुर्भाग्य हमारा ये था कि हम उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया के नीचे थे, जिनका पूरा पूरा ध्यान जो था वो कॉमर्स पे था, पैसा कमाने पे था। उन्होंने ज्योग्राफी को इस्तेमाल किया फॉर डेवलपिंग देयर इंपीरियल स्टेट। ग्रेट गेम चल रहा था, उसके अंदर वो ये नहीं चाहते थे कि रशिया आके यहाँ पे कुछ इन्फ्लुएंस करे। तो बहुत सारा एरिया जो उन लोगों ने बफर स्टेट बनाया था, इंटायर तिब्बत और अक्साई चीन का और ये सब जो स्टेट बना था, ये बफर स्टेट के हिसाब से बना था, और उन्होंने उस टाइम पर अपनी बाउंड्री मार्क कर दी थी। अब इस बैकग्राउंड के साथ अब हम बहुत ब्रीफली देखेंगे कि वेस्टर्न और ईस्टर्न सेक्टर में एक्चुअली हुआ क्या था, ये क्यों इतना कंफ्यूजन है। इससे पहले कि हम चलें, अगर हम इस मैप को देखते हैं तो सबसे ऊपर दैट रेंज, यस रेंज वाला ओके सर पहले। ओके, आप कर लो, यू कैन डू इट। सर प्रीवियस वन आई कांट, इसमें हो नहीं रहा। ओके, या ओके, अगर हम रेंजेस की बात करते हैं तो सबसे ऊपर अगर मैप किया तो देखें जहां 7,967 लिखा है, दिस इज कुनलन माउंटेन्स। ये एक रेंज है, और जो ये ग्रीन में दिया हुआ है, इट इज द एवरेज हाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर रेंज। फिर काराकोरम, लद्दाख, जंस्कार, कैलाश उसके तरफ आ जाता है, उसके नीचे ग्रेट हिमालय आ जाता है। तो अगर हम लद्दाख की तरफ अपना ध्यान देंगे तो यहाँ पैरेलल कई सारी रेंजेस हैं। अब ये जो पैरेलल रेंजेस हैं, इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन ज्यादा हो गया, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ब्रिटिश एंड द थॉट प्रोसेस ऑफ द ब्रिटिश, अलग अलग टाइम पर अलग अलग रेंज को अपनी बाउंड्री की तरीके से देखा गया। अगर हम अभी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाते हैं तो उसमें आप देखिए क्या हुआ। 1830 में गुलाब सिंह ने लद्दाख, और जो कि महाराजा थे जे के, उन्होंने लद्दाख और बाल्टिस्तान को जीत लिया। अब महाराजा गुलाब सिंह जो थे वो ब्रिटिशर्स के नीचे थे, और अब ब्रिटिशर्स इस बात पे परेशान थे कि अगर किसी कारण गुलाब सिंह की वजह से अगर चाइना के साथ लड़ाई होती है तो उनका कॉमर्स जो है अगेन एडवर्सली इफेक्ट होगा। तो उन्होंने एक लाइन उसको दे दी महाराजा गुलाब सिंह की एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप इसके बाहर नहीं जाएंगे। 1842 के अंदर फिर डोगराज और टिबेटन्स के बीच में एक ट्रीटी हुई। अब 1849 में ब्रिटिशर्स ने ये गुलाब सिंह जी को क्लियर कर दिया कि आप हमसे परमिशन लिए बिना तिब्बत के अंदर नहीं जाएंगे। और उसके बाद आप देखिए सबसे ऊपर जो कुनलन रेंज हमने बताई थी, एक जॉनसन, उन्होंने कुनलन रेंज को प्रपोज किया कि हमारा जो बाउंड्री है वो वहां तक होना चाहिए। उसके बाद Britishers also had two options. One was called the forward policy and one was the moderate policy. Forward policy said कि रशियंस ऊपर से आ सकते हैं सिंचियांग के थ्रू, तो हमको अपनी बाउंड्री जितनी आगे हम रख सकते हैं हम रखेंगे। Whereas there was a moderate British policy which said कि हमको वहीं तक की बाउंड्री रखनी चाहिए जो कि हम फिजिकली उसको मेंटेन कर सकें, हमारे को ज्यादा लॉजिस्टिक प्रॉब्लम ना हो वहां पर। 1873 के अंदर फिर काराकोरम रेंज को कर दिया गया, जो कि बाउंड्री सोची गई कि इसको बना दिया जाए, जो कि कुनलन माउंटेन और जो जॉन्स करेक्शन काराकोरम रेंज है, कुनलन माउंटेन से कम एरिया था। 1892 में पहला बॉर्डर पिलर रखा गया जो कि काराकोरम पास पे रखा गया। इंसिडेंटली दिस इज द ओनली बॉर्डर पिलर व्हिच एग्जिस्ट्स इन दिस एरिया, which is a clear area demarcation of border। 1897 में फिर जॉनसन आर्दा लाइन आई,
1898 में मैकार्टनी और मैकडोनाल्ड ने ये दोनों जो एक्सट्रीम लाइंस थी इसके बीच में कंप्रोमाइज करके एक और लाइन दी, और 1899 में ब्रिटिशर्स ने फॉर्मली लिखा सिंचियांग एडमिनिस्ट्रेशन को, जिसके नीचे ये एरिया आता है, और चाइनीज गवर्नमेंट को। सिंचियांग एडमिनिस्ट्रेशन उस टाइम, जो कि चाइना के नीचे नहीं था, इस लाइन से एग्री कर गया। चाइनीज गवर्नमेंट ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसके बाद यहाँ पे कोई ज्यादा पॉपुलेशन नहीं थी, जार रशिया के अंदर हार चुके थे, तो अब ग्रेट गेम का भी और जो रशियन इन्फ्लुएंस का था वो भी थोड़ा सा बैकग्राउंड में चला गया। ब्रिटिशर्स ने इसको इसके आगे नहीं चलाया। अब इसकी वजह से क्या हुआ, इनमें से कोई भी ट्रीटी अकॉर्डिंग टू चाइना हैज नॉट बीन साइंड बाय बोथ द पार्टीज। Most of them remained as a proposals that we will make this as the thing, other than the Johnson line, जो कि हम उसको प्रपोज करते हैं और मानते हैं कि ये हमारा एरिया है, जो कि आपको बिल्कुल राइट टॉप मैप के ऊपर जो बाउंड्री दिख रहा है, एज पर आर स्टैंड दिस इज द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना। यहाँ पे मैं थोड़ा इंटरजेक्ट करूंगा ये बताने के लिए कि देखिए, जो यहाँ जो ये वाला इलाका है, लद्दाख वाला जो इलाका है, ये इन लाइनों की वजह से बड़े कंफ्यूजन में रहता है। तो मीडिया में अलग अलग स्टोरियां चलती हैं कि इंट्रूजन हो गया और चाइनीज अंदर आ गए, या हम उस पार चले गए, या हम पीछे हट गए। ये आपको इन लाइनों को ध्यान में रखते हुए समझना चाहिए कि किसी का परसेप्शन कुछ है, किसी का परसेप्शन कुछ है। अगर हम लेते हैं कि हमारी जो स्टेटेड पोजीशन है, वो जो बाउंड्री दिख रही है, इंटरनेशनल बाउंड्री, जो कि सबसे ऊपर से जो लाइन ब्लैक ब्लैक लंबी लाइन है, तो एक्चुअली देखा जाए तो चाइनीज एक्साइज चीन में पूरी तरह से अंदर है। तो इसमें इंट्रूजन का कहाँ सवाल हुआ, वो तो पहले से इंट्रूडेड है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये सब जो है एलएसी से लेके हो रहा है। एलएसी में भी अलग अलग परसेप्शन हैं, उसकी बात तो भाटिया जी ने की नहीं, मैं क्योंकि उसमें फिर और टाइम वेस्ट हो जाता है। एलएसी के भी उनके कुछ परसेप्शन हैं और हमारे कुछ परसेप्शन हैं, तो अपने परसेप्शन से वो अंदर रहते हैं, हम अपने परसेप्शन से उधर जाते हैं, तो दोनों इधर उधर जाते हैं। तो दिस इज जस्ट अ क्लैरिफिकेशन व्हिच आई वांट टू गिव टू ऑल ऑफ यू, दैट प्लीज डू नॉट believe everything what the media tells you. You have to really go into detail and understand what exactly is happening on the border. Okay, go ahead. Sorry. Another issue, sir, in addition to what you have clarified, sir, I will also say that why did we do this? Why so many lines? Because as we saw, these all ranges are parallel. So there is always a greed, or I would say greed, an effort to go ahead and occupy the heights. In mountains, heights are the most important thing. And that is the reason that different people propose different ranges to be occupied, so that they get that much of extra elevation so as to dominate this area. That is why various lines had been proposed. Yes, sir. Okay. Now coming on to eastern sector, now like we had seen in the map of ranges, unlike in Ladakh area, the most dominating height here remains the Great Himalaya. Now, Great Himalaya range, which was there, was taken as a boundary between India and Tibet, and China had participated in that particular meeting, which was held in 1913 to 14 in Shimla, called Shimla Convention. अब उसके बाद चाइना ने जो करेक्शन जो टिबेट था उसको दो हिस्सों में बांटा गया, जो आउटर टिबेट और इनर टिबेट। इनर टिबेट के ऊपर मोर और लेस कंट्रोल जो था चाइना को दिया गया, टोटल सुजर्निटी, और आउटसाइड टिबेट जो एरिया, आउटर टिबेट जो कि इंडिया के साथ उसका बॉर्डर बनता है, उसको ऑटोनोमस रखा गया। तो चाइना को उस टाइम पर जो आज टिबेट ऑटोनोमस रीजन है उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी, लेकिन बाद में, और उन्होंने इस कन्वेंशन के ऊपर सिग्नेचर भी नहीं किए, तो बाद में उन्होंने यही बोला कि क्योंकि हमने इसके ऊपर सिग्नेचर नहीं किए थे, इस वजह से आज मैकमोहन लाइन को वो नहीं एक्सेप्ट करते हैं। उनके हिसाब से जो अरुणाचल प्रदेश असम बॉर्डर है, वो लाइन जो है उसको वो मानते हैं कि ये हमारा बॉर्डर है, और इसको वो सदर्न तिब्बत कहते हैं। और वो
90,000 स्क्वायर किलोमीटर जिसको हम कह रहे हैं उसके ऊपर वो क्लेम करते हैं, बट ऑन ग्राउंड हम लोग अरुणाचल प्रदेश के अंदर हैं, हम ये हमारा हिस्सा है और हमारी स्टेट। सो दिस इज अबाउट बैकबोन लाइन। Now, having seen these disputes, let's now see, as General Dushyant had mentioned, that China has resolved their boundaries with almost all countries other than India and Bhutan. Now, what were the strategies which actually are available to anybody to resolve the boundaries? The first strategy is called do nothing. कि आपका डिस्प्यूट है उसको आप चलने दीजिए, जिस तरह से वो चल रहा है वो चलता रहेगा और टाइम के साथ साथ आप उसको रिजॉल्व कर लेंगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। लाइक चाइनीज से लेट द बाउंड्री इशू बी डिसाइडेड बाय द कमिंग जनरेशंस। अब वो इससे होता क्या है कि अगर इस तरह से ये डिस्प्यूट चलता रहेगा तो एक तरह का मिसट्रस्ट जो है एक दूसरे के ऊपर क्रिएट होएगा। उस मिसट्रस्ट की वजह से आपके जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो पुअर रहेंगी और टेंस रहेंगी, हमेशा आपको टेंशन रहती। ये इसकी कॉस्ट आपको पे करनी पड़ती है अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं एक डिस्प्यूट में। लेकिन उसके कुछ फायदे हैं और वो क्यों करती हैं कंट्रीज। एक तो जो कंट्री थोड़ी सी अपने को वीक समझती है वो कुछ टाइम लेती है कि उसको टाइम मिल जाता है कि वो अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करे। और किसी भी कंट्री में अगर आपने बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व करना है तो आपको कुछ एरिया देना पड़ेगा और कुछ एरिया आपको मिलेगा। दिस इज पार्ट ऑफ नेगोशिएशन। तो अगर हम फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं कि हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो हम अपने डोमेस्टिक सपोर्ट को तैयार करने के लिए हम फॉर द टाइम बीइंग वी अडॉप्ट द स्ट्रेटेजी ऑफ डूइंग नथिंग। और कभी कभी वो स्टेट जिसके पास एरिया ज्यादा होता है वो भी इसको अडॉप्ट करता है कि मेरे पास एरिया ज्यादा है तो मैं इसको स्टेटस को में रखूं। दूसरी स्ट्रेटेजी है कि आप दूसरी कंट्री को कुछ कंसेशन और कॉम्प्रोमाइजेस दे देते हैं। अब वो किस स्टेज में देते हैं, जब अचानक आपको लगता है कि जो दूसरी कंट्री है उसमें सडनली उसका जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है एंड वी आर नॉट एबल टू मैच दैट स्ट्रेंथ। सो इन दैट कंडीशन यू मे ऑफर कंसेशंस और कॉम्प्रोमाइज। This can also be, the other reason could be that you counter the internal and external threats. आपको अपने एरिया के अंदर कुछ थ्रेट लग रही है, आपको लगता है कि अगर मैं ये बाउंड्री इशू को रिजॉल्व कर लूंगा मेरे को दूसरी कंट्री के साथ कोऑपरेशन मिलेगी मेरी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उसकी वजह से भी आप कंप्रोमाइज कर सकते हैं या कंसेशन दे सकते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कभी कभी आपको लगता है कि जितना खर्चा स्टेटस को रखने में लग रहा है, जो आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको आर्मी मेंटेन कर रहे हैं, आप उधर लॉजिस्टिक दे रहे हैं, आप उधर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, उसकी वैल्यू फॉर लैंड जो है वो जो पैसा आप खर्च कर रहे हैं वो जमीन जो आपने रखी हुई है उससे आपको कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, तो आप उस टाइम पर भी आप कंसेशन या कंप्रोमाइज देते हैं। लेकिन इसमें रिस्क क्या है, इसमें रिस्क जो है जो लीडर जो ये डिसाइड करता है हो सकता है कि उसकी अपनी कंट्री उसको ना माफ करे फॉर गिविंग कंसेशंस और ब्लिक कंप्रोमाइज। सो दिस इज अ बिग रिस्क व्हिच द पर्सन हैज टू टेक। इंसिडेंटली हम आगे भी देखेंगे चाइना ने अपने जितने भी कंप्रोमाइजेस किए हैं वो अपनी किसी ना किसी वीकनेस की वजह से किए हैं। जनरली हम कहते हैं यू नेगोशिएट विद प्रॉब्लम फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ, बट इन केस ऑफ चाइना every negotiation is because of some vulnerability which they had, and by resolving the border they have removed the vulnerability. और तीसरी जो strategy for resolving the conflict automatically becomes you threaten or you actually use the force. अब इसमें रिस्क ये होता है कि आपको एक्चुअली पता नहीं है, आप उसको लिमिटेड एरिया में कर रहे हैं, फोर्स को यूज कर रहे हैं, अगर वो एस्केलेट कर गया, अगर वो बढ़ गया तो क्या आप उसको डैमेज जो करेगा उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो स्ट्रेटजी है जनरली जो मिलिटरीली ज्यादा स्ट्रांग होती है नेशन बिटवीन द टू दे यूज इट, या एडवर्सरी की पावर एकदम कुछ समय के लिए किसी रीजन से अगर कम पड़ गई है तो यू यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू यूज फोर्स एंड डिक्टेट टर्म्स टू हिम। तो और कभी कभी ये भी होता है कि जो
दोनों पार्टीज के बीच में जिसकी पोजीशन थोड़ी सी वीक होती है, वो भी जब उसको मौका मिलता है और उसको एक विंडो मिलती है, उस टाइम पर ही कैन गो एंड यूज द force. Now we will see with each country how did China resolve it and what was the vulnerability that I was talking about. कि अगर उसने क्या उसको इंटरनल थ्रेट्स थी, एक्सटर्नल थ्रेट्स थी, जिसकी वजह से उसने बाकी कंट्रीज के साथ कंप्रोमाइज किया और कितना कंप्रोमाइज किया, ये अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। यहाँ पे मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो हमने स्ट्रैटेजीज बताई हैं आपको, डू नथिंग, ऑफर कंसेशन, थ्रेटन और यूज ऑफ फोर्स, ये जरूरी नहीं कि इसी तरह से कट एंड ड्राई पैकेट्स में करी जाए। इट कुड बी अ मिक्स ऑफ डू नथिंग, ऑफर कंसेशन, बीच बीच में ऊपर नीचे होता रहेगा। लेकिन जहाँ तक थ्रेटनिंग द यूज ऑफ फोर्स इज कंसर्न, इसको बहुत ध्यान से करना पड़ता है। और स्पेशली जो हमारे कंटेक्स्ट में, इंडिया चाइना या इंडिया पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में यूज ऑफ फोर्स का जो बहुत बड़ा डेंजर वो ये है कि तीनों जो नेशंस हैं, जो इंडिया कह लीजिए, चाइना कह लीजिए, पाकिस्तान कह लीजिए, न्यूक्लियर नेशंस हैं। तो इसलिए हम आप देखते होंगे कई बार पीपल से दैट व्हाई डोंट वी गो एंड अटैक एंड व्हाई डोंट वी यूज द फोर्स एंड व्हाई डोंट वी डू एक्स वाई जेड, व्हाई डोंट वी रेज द एस्केलेशन लेवल। It is one of the major factors that we don't know what is the red line of the other country. So we have to be very sure, our intelligence has to be very good as to how much of an action we can take, कितना action हम ले सकते हैं before we can take the decision of using force. Let's go ahead in the history. ये मैप अगर आप देखें, मंगोलिया जो सबसे ऊपर है, वहां से एंटी क्लॉकवाइज अगर हम चलते हैं तो सारी कंट्रीज के साथ जितनी भी लैंड बॉर्डर्स हैं, जितने लैंड बॉर्डर्स हैं, हर एक के साथ चाइना का कुछ ना एरिया जो है वो डिस्प्यूटेड था, जो कि डाकर एरिया के अंदर मंगोलिया के बाद कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हर एक के साथ उसका कुछ ना कुछ इशू था, जो कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसके क्लेम्स हैं। अब उसने कैसे सॉल्व किया सर? नेक्स्ट। अभी ये बर्मा के साथ 1909 किलोमीटर का उसका रेंज था। अब इंटरेस्टिंग थिंग ये, उसने कंप्रोमाइज किया और 82% ऑफ इट्स लैंड इट गेव इट इन द कंप्रोमाइज। सिमिलरली इन केस ऑफ नेपाल 94, इंडिया ही ऑफर्ड 74%, वी विल टॉक अबाउट द स्वैप, 60, 65, 40 in case of Pakistan and 100% in case of Afghanistan. He did not use force in any other cases other than in case of India. He used force in 1962, and the reasons for this in all first three were revolt in Tibet. जब ये 1950-51 में टिबेट में एनेक्स किया था, हमने पिछले एपिसोड में कवर किया था। 1959 में there was a major revolt in Tibet. तो ये टाइमिंग्स 1960 का यही था कि उसने जो नेबरिंग कंट्रीज थी टिबेट की, उनके साथ कंप्रोमाइज कर लिया। जब हम 1962 में सिंचियांग में प्रॉब्लम शुरू हो गई और एक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ग्रेट लीप, जिसके अंदर उनकी इकोनॉमिक कंडीशन काफी खराब हो गई थी चाइना की। उसके बाद जो मंगोलिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ किया, वो सिंचियांग की वजह से किया। उसके बाद सोवियत जो ईस्ट में उनकी थी, उसमें 48% एरिया देते हुए तकरीबन 1000 किलोमीटर का कंप्रोमाइज किया और उसमें फोर्स यूज हुई और सिंचियांग और इकोनॉमिक क्राइसिस। उसके बाद 1964 के बाद जो मैंने एक रेक्टेंगल में किया हुआ है, 1964 के बाद कोई कंप्रोमाइज नहीं हुआ। उसके बाद 1990 में आके उन्होंने कंप्रोमाइज किया। अब 1990 में क्यों इतने साल, तकरीबन 26 साल उन्होंने कुछ नहीं किया? उसका रीजन ये था कि 1990 में से पहले जून 89 में उनका टाइनमेन स्क्वायर में एक ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ था, जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया में आइसोलेट हो गए थे। तो उसको करने के लिए अब उनको आसपास के क्या सपोर्ट चाहिए था। तो 90 में फिर उन्होंने इसी वजह से लाओस, भूटान, वियतनाम, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, और उस टाइम ये भी हुआ था कि रशिया जो है वो बट गया था इनटू द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, तो उसके साथ उसने फ्रेश नेगोशिएट करना था। और फोर्स अगर पूरे एरिया में देखा जाए तो इंडिया, सोवियत
यूनियन और वियतनाम, इन 3 केस के अंदर उसने फोर्स यूज की, बाकी किसी भी कंट्री के साथ उसने फोर्स नहीं यूज की। ये 15 कंट्रीज हैं, सोवियत यूनियन 2 बार आ गया, 15 कंट्रीज हैं जिसके साथ इन्होंने नेगोशिएट किया। इसके अलावा इनके 3 केसेस हैं होमलैंड, होमलैंड के अंदर हांगकांग, मकाओ और ताइवान, जहां इनके क्राइसिस चल रहे हैं। एंड देन देयर आर फ्यू आइलैंड टेरिटरीज, स्पार्टले, सेनकाकू, पारासिल, ये सब जो है इसके अंदर भी ये चल रहे हैं। लेकिन अब हम सिर्फ लैंड बॉर्डर्स को डिस्कस करेंगे, होमलैंड और आइलैंड टेरिटरीज को हम नहीं कवर कर रहे। अभी दिस इज द समरी। टोटल 23 डिस्प्यूट है, होमलैंड, आइलैंड और लैंड, उसमें से 17 इन्होंने सॉर्ट आउट कर दिए और 17 में से 15 केसेस जो हैं वो बायलैटरल एग्रीमेंट से किए। इंडिया और भूटान का नहीं हो पाया बायलैटरल एग्रीमेंट से, 17 में से 15 किए। अभी जैसे कि मैं कह रहा था 1960 और 64 के बीच में जब इनको तिब्बत और सिंचियांग में प्रॉब्लम थी इंटरनल, उस टाइम पर 8 कंट्रीज के साथ उन्होंने बात की, उसमें से 6 के साथ उन्होंने सॉर्ट आउट कर लिया। और 1990 से 2003 जब अगेन इनकी इंटरनल इंस्टेबिलिटी हुई, जो 9 रह गए थे उनके साथ भी इन्होंने बॉर्डर सॉर्ट आउट कर लिया। और आपको मैंने बताया कि 74, 73 अफगानिस्तान के केस में 100% कॉम्प्रोमाइज उन्होंने किया। लेकिन ये भी एक कि ये एक्चुअल कॉम्प्रोमाइज था। कई बार क्या है कि ये इन्फ्लेट कर देते हैं अपना क्लेम और उसके बाद जितनी टेरिटरी इनको चाहिए वो अपने पास रख लेते हैं और बार्गेनिंग के अंदर वो टेरिटरी जो है, कहते हैं चाइनीज उनको दे शो ए एटीट्यूड दैट वी हैव बीन मैग्नानिमस एंड वी हैव हैंडेड ओवर द एरिया टू यू। सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द टेक्निक्स दैट दे एम्प्लॉय। यहाँ पे मैं थोड़ा इंटरजेक्ट करूंगा ये बताने के लिए कि ये खाली नेगोशिएशंस में नहीं यूज करते हैं, इसको दे ऑल्सो यूज इट ड्यूरिंग स्मॉल बॉर्डर लेवल कॉन्फ्लिक्ट्स और ट्रांसग्रेशन जैसा इसका नाम दिया जाता है, उसमें भी ये करते हैं। ये 2 स्टेप आगे आते हैं फिर 1 स्टेप पीछे चले जाते हैं, यानी इसको जो बोला जाता है सलामी स्लाइसिंग जिसका नाम रखा है, तो वो कुछ दूर तक आएंगे फिर पीछे हो जाएंगे। 1962 में भी उन्होंने यही किया, काफी अंदर तक आ गए थे अरुणाचल में वो, लेकिन फिर वो वापस चले गए अपनी सो कॉल्ड एज पर देयर एट दैट टाइम प्रेवलेंट जो उन्होंने ऑफर किया था उस लाइन पे आ गए थे वो लोग। तो इस तरह की हरकत करने की इनकी आदत दोनों में है, लड़ाई में भी है, बॉर्डर स्कर्मिशेस में भी है और नेगोशिएशंस में भी है। तो हमको वी हैव टू बी केयरफुल व्हेन वी नेगोशिएट विद देम, that we have our maps right, we have our facts right, and when we negotiate we know that they are actually compromising or actually giving a concession. It cannot be a concession one way. So this we need to be careful, and all those people who will later on rise above and go into higher positions for and get involved in flag meetings and discussions and deliberations must keep this in mind. Okay, go ahead. Now let's see where does the solution lie. Now we have already seen कि चाइना ने किस पोजीशन के अंदर इसको किया और अभी सोल्यूशन क्या है। सबसे पहले क्या वो हिस्ट्री है। अब हिस्ट्री की प्रॉब्लम जैसे कि मैंने ब्रीफली पहले भी बताया था, 1684, 1842, 1865, 1896, 1899 इन सब टाइम पर कुछ ना कुछ किया गया बॉर्डर के बारे में। आई एम टॉकिंग अबाउट लद्दाख बॉर्डर। लेकिन हर केस के अंदर चाइना का रिएक्शन ये रहा कि ये हम नहीं मान रहे। और द रीजन विच दे हैव गिवन इज लाइक इन फर्स्ट केस दे सेड कि लद्दाख क्रॉनिकल्स के अंदर है, हमारे पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। देन ट्रीटी ऑफ चुसूल, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ नोट था, इट वाज नॉट ए ट्रीटी। जॉनसन आर्दा दे सेड नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज ये यूनिलैटरल सर्वे था और इसके अंदर हम लोगों को नहीं किया इन्वॉल्व किया गया। एंड मोर ओवर आफ्टर द बॉर्डर वाज इट वाज नॉट डिलिमिटेड। डिलिमिटेड मींस ऑन ग्राउंड के ऊपर उसके अंदर कोई डिमार्केशन कोई वो नहीं किया गया था। एंड इवन 1899 मैकार्टने मैकडोनाल्ड आल्सो दे सेड कि इट वाज प्रपोजल टू डिलिमिट वाज गिवन एट दैट टाइम, लेकिन चाइनीज ने उसको रिस्पॉन्स ही नहीं किया। सिमिलरली मैकमोहन के बारे में हम बात कर चुके हैं, वो China refuses to accept that. So how do you go into history when firstly, yes, we agree that the treaties are not worded accurately, there are some vague references and everybody is doing selective reading according to what suits him.
So, is history the answer? Probably not a complete answer. Then what do we do? Do we go into the next, that is the traditions which have been there? Now, अब प्रॉब्लम है कि यहाँ कन्फ्लिक्टिंग ट्रेडिशंस है. अब इंडिया का ये कहना है कि चाइनीज का जो मैप था 1893, 1917 और 1919 में, वो जो इंडिया और चाइना का बॉर्डर दिखाता है या तिब्बत और इंडिया का बॉर्डर दिखाता है, वो एग्जैक्टली वही है जो कि आज हम अपने मैप पे दिखा रहे हैं. लेकिन इसका जवाब चाइनीज के पास ये है कि उस टाइम पर ये हमारे मैप नहीं थे, कम्युनिस्ट पार्टी के मैप नहीं थे, ये तो पहले के चले आ रहे थे, एंड वी हैव had a relook. Another problem with Chinese is, in addition to that slimy slicing, उनकी जो भाषा वो यूज करते हैं उसमें वो गैप छोड़ देते हैं, और बाद में they are quite capable of going back on their word, trying to give a different interpretation of what they have used. And to some extent, the Chinese language also helps them. Like every word has got three tones: the high, the middle, and the lower. And all three tones have different meaning. So when you try to say that you said so and so, they say, no, 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 you have misinterpreted. The word used is same, but the tone makes a lot of difference. So they can go back on what they say. Similarly, China tells us that in 1938, Survey of India had made a map, map they had published, and in 1951 edition of Nehru's book, Discovery of India, it actually did not show McMahon line. So they turn back and say that even in your maps, it is not given. No. I would like to share here that yes, by mistake, a map was exchanged of a different line जब ये negotiations हो रहे थे. उस टाइम पर ये विड्रॉ कर लिया गया, इस मैप को तुरंत विड्रॉ कर लिया गया और फिर उसके बाद करेक्ट मैप सबमिट किया गया था चाइना को. लेकिन उसके बाद मैप्स की एक्सचेंज ही नहीं हुई है. दिस आई मस्ट टेल यू that there has been no exchange of maps done by China deliberately. कि they know that on the map theory ground they will not stand a chance. Correct. क्योंकि हर किसी केस में जो जो भी लाइन आप ले लें करंट पोजीशन से वो बेटर है. कुछ एक जगह पे थोड़ा सा दे आर कमिंग ऑलमोस्ट क्लोज टू द एलएसी, बट बाय एंड लार्ज एवरीवेयर एल्स we would tend to gain in case if we have to agree on any of the map stated lines, except for one or two maps जो तिब्बत के हैं वो गलत. तिब्बत का भी एक मैप एक्सटेंड करता है राइट अप टू द प्लेन्स ऑफ 1999. या प्लेन्स ऑफ बंगाल. तो इस तरह के Correct. मैप्स एनवायरनमेंट में फ्लोट कर रहे हैं. उनकी सच्चाई कितनी है, कितने ऑथेंटिक हैं, वो कब बने थे, all that is under question. A detailed review has to be done before we can accept these maps. So maps तो out of the contention हो गए हैं. हाँ, ठीक है, okay. बिल्कुल. तो सेकेंड ऑप्शन विच थियोरेटिकली पीपल टॉक अबाउट इट, कि क्या हम एग्जिस्टिंग एलओसी को बॉर्डर में चेंज कर सकते हैं. अब हमारे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं और हमारे स्ट्रिंजेंट मैकेनिज्म टू एंश्योर कंप्लायंस ऑफ दिस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स आर आल्सो इन प्लेस. वी विल टॉक अबाउट इट स्लाइटली लेटर. तो एक तरह से अगर आप देखें, अब चाइना ने सियाकोंग विलेजेस बना लिए हैं अलोंग द एलएसी. हमारी जो पॉपुलेशन है that is staying in our area right up to LAC. तो क्या एक फ्यूचर में ये एक कंप्रोमाइज हो सकता है दोनों तरफ से? इफ वी कम ऑन टू द सेम टेबल, पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट्स, एंड लॉट ऑफ पीपल डू टॉक अबाउट इट दैट दिस इज प्रोबेबली द मोस्ट प्रोबेबल सॉल्यूशन व्हिच कुड बी थॉट ऑफ. क्या ये ईस्ट वेस्ट स्वैप हो सकता है? वेरी ब्रीफली, जब 1956-57 में चाइनीज अक्साई चेन एरिया से अपनी एक रोड बना रहे थे जिसको वेस्टर्न हाईवे G219 बोलते हैं, जो कि सिंचियांग से तिब्बत के अंदर ज्वाइन कर रही थी, तो उस टाइम पर चाओ एनलाई ने 1960 में ये एक ऑप्शन दिया था कि हम अक्साई चेन रख लेते हैं और आप अरुणाचल को रख लीजिए. सो दिस इज कॉल्ड ईस्ट वेस्ट स्वैप. बट आज की डेट में क्या ये ईस्ट वेस्ट स्वैप किसी को भी एक्सेप्टेबल है? हमको उस वक्त भी नहीं था, और चाइना अभी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में है तो उसको भी नहीं एक्सेप्ट होगा. तो दिस आल्सो डज नॉट फिट द बिल. तो उसके बाद जो नेगोशिएशन के बारे में सर आप बात कर रहे थे, तो वेरी ब्रीफली इन 2000 what had happened was that maps of the central sector were exchanged, no comment was made,
We kept their maps and they kept our maps. But no comment was made. And the next, we went to Western sector. Moment we gave our map and they gave their maps, they went into a huddle. After 30 minutes, like you had mentioned, they asked for their map back and we asked for our maps back. What happened in that, they did not convey, neither we have conveyed. Till date, we don't know what happened and what they conferred in that 30 minutes time and why they withdrew the map and we withdrew the map from it. So that was the end of exchange of maps. So problem is solution cannot be found till such time we stick to our positions. Like the Chinese like to say that it is give and take. It cannot be take. And similarly, I mean, this is a rough version of what they tell us. So where is it? Where is the solution? Again, shall we go in for yet another model which is internationally being accepted? See, on ground what happens is कि जो natural frontier बनते हैं किसी भी area का और जो strategic frontier बनते हैं उसके अंदर बहुत difference होता है. अब nations खास तौर पे पहाड़ी एरिया के अंदर they like to dominate the heights. अब watershed एक प्रिंसिपल है और थैलविक एक दूसरा प्रिंसिपल है. अब वाटरशेड में क्या होता है, जो राइट नीचे आप देखेंगे, वाटरशेड का मोटा मोटा मतलब यह है कि अगर एक रेंज है जिसके ऊपर एक क्लाउड से पानी गिराया जाए तो आधा पानी उस रेजर शेप जो बीच में है उसके दोनों तरफ जाएगा. सो दैट इज कॉल्ड द वाटरशेड प्रिंसिपल, जो कि हम आज जो बैकबोन लाइन जनरली इज ऑन द वाटरशेड प्रिंसिपल. Similarly, in Ladakh also, along Karakoram and Janskar, not Janskar, Ladakh, Kailash range, and then to Janskar is the watershed area. लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम हो जाती है, watershed area के अंदर dominating heights become very important. So there is yet another principle which is called Thalweg doctrine. Thalweg doctrine is the one where the lowest point in the river valleys is taken as the boundaries. The middle of a flowing water is taken as the boundary between the two. Now here, the problem of heights is so much because you are on the two sides of the valley. Now, there is also, passes are extremely important in mountains because the communications from one valley to another has to be through passes. So is it time for us, in case we seriously want to resolve the border, that we come on to combination of these three methods of passes, watershed and thalweg, depending on the terrain. But I think it's a tall order, but this is what nowadays internationally recommended border resolution methods are there. So I would like to say something on this. These are the principles of dividing borders. Okay. But we have to first agree ki which principle do we want to agree. Now, whatever principle we agree, there would be certain areas which would be advantageous to us, and there would be certain areas which would not be advantageous to us, right? So, therefore, it has to go section by section. ऊपर से नीचे आना पड़ेगा और उसके सबसे पहले जो है willingness to do the border agreement is more important. In every track 1.5 चाइना के साथ जो हमारी ट्रैक 2 डिप्लोमेसी होती है, पाकिस्तान के साथ हम उसको ट्रैक 2 बोलते हैं, चाइना के साथ ट्रैक 1.5 बोलते हैं. Every such interaction, the mere fact is that the Chinese say that what is the hurry to go in for border resolution? Everything is going fine. So why do you need to do a border resolution? We should focus on other areas, other sectors. But it is good that now India has taken a stand that unless we achieve a position pre-2013, we will not get into any negotiation. So we have also taken a hard stand as of today. Pre-2013 also we were in a disadvantage in number of places. So therefore, we have also given some leeway to Chinese, and the Chinese now must come up a step forward and say, ki, okay, we will withdraw everything pre-2013 and then go by these principles what we are talking of wherever they are applicable. Absolutely. For example,
फॉर एग्जाम्पल आप लद्दाख की अगर बात करें तो ये जो वाटरशेड वाला प्रिंसिपल उतना बढ़िया नहीं चलेगा वहाँ पे, नहीं क्योंकि चलेगा। वहाँ की जो रेंजेस हैं थोड़ा अलग लेआउट है उनका। देयर विल हैव टू फाइंड अ बॉर्डर बॉडी प्रिंसिपल और whichever way we want to decide. I can't tell you specifically कि कौन सी किसको कहाँ से डिवाइड करेंगे। पेंगांग सो का अलग ही फ्लो है, इंडस का अलग फ्लो है, श्योक का अलग फ्लो है। तो वी हैव टू डिसाइड कि हाउ वी आर गोइंग टू divide the line. And for us, best thing, like we said, we have our Kunlun as the boundary which we have reflected, because historically भी पहले भी वही boundary दिखाई जाती थी in all the maps. So that is a very strong position as far as India is concerned. I think we should not budge from there. Till then, we have to put up a strong face, buy time, develop our capabilities, and when we have the enough strength, that is the time we should actually start dictating terms for a border dispute. Okay, we will. I Absolutely. think. You will have to hurry up. Just do I, something. I Okay. think. I think these are all known to people that Yes. we have been assertive after 1962 और 1967 में आपने देखा Certain होगा चोला नाथुला दोनों में हमारे एक्शंस हुए थे। correction. काफी स्ट्रॉन्ग एक्शंस हुए थे और चाइनीज वर रियली एक्चुअली गिवन अ बीटिंग इवन इन गलवान। Chinese were given a beating, but these are tactical. But what all Correct. of our audience has to understand कि ये tactical battles हैं। जब strategic level पे national level पे battles होंगे तो everything will be brought to bear on us. We will be able to beat back the Chinese as far as the tactical battles are concerned, as far as the battle on the borders are concerned. But there are other aspects of battle today. The modern battlefield is absolutely totally different, right? And there you will find all kinds of hell coming onto both sides, and both are nuclear weapons. How long, for how much will we escalate? That is a big question which we have to answer ourselves. What is our logistic stamina? हमारी जो वॉर वेजिंग स्टेमिना कितनी है वो देखना पड़ेगा। वी बी एबल टू डू वेल, लेट्स से अप टू 1 month 2 months, देयर आफ्टर व्हाट? वी रिमेंबर वी आर अ इंपोर्ट डिपेंडेंट डिफेंस फोर्सेस, वी आर अ बायर्स डिफेंस फोर्स हैं हम लोग। यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है जिसको कि दूर करने की कोशिश की जा रही है। इसको दूर करने के लिए कम से कम 20 साल लगेगा हमको। 15 वेपन डेवलपमेंट का साइकिल जो होता है ऑलमोस्ट 10 to 20 years होता है। इनफैक्ट 10 तो मैं बड़े ऑप्टिमिस्टिकली बोल रहा हूँ, आप लोगों को एक्चुअल पता चलेगा तो आप ध्यान दे सकते हैं। अगर तेजस को ही देख लीजिए कितना साल लग गया और अभी तक उसका इंजन नहीं बना है। और उसी तरह से स्मॉल आर्म्स का देखिए, उसी तरह से टैंक्स का देखिए, कब से हम टैंक्स के ऊपर काम कर रहे हैं, बट अभी तक वी हैव नॉट बीन एबल टू मेक अ गुड टैंक इंजन। सो वी हैव challenges, so we can't undertake a war across the entire frontage uh, and hope to resolve our borders. We will be able to deter them, but not resolve our borders. So there is a difference at the tactical level and at the a total war being fought with China. I think with that we will close our discussion for today. And if you want to say on this slide Yeah. anything, you can go ahead and say. Yeah. Okay. So these are the resolution of border. What we have said, there are certain enablers and there are certain spoilers. First of all, हमको चाइना के बारे में देखना चाहिए कि अगर वो दूसरी कंट्री के साथ रिजॉल्व कर सकता था तो शायद हमारे साथ भी there will be a chance when we create or there happens a issue where it is in weakness, there is some weakness we are able to identify or create and we become stronger. Of course, lure of economic opportunities for both the countries is tremendous, and we are cooperating in forums like SCO and BRICS. So why can't we settle the problem? Now, where are the spoilers? Spoilers are that Beijing thinks that in Asia, it is the supreme. China is at top, and India is not equal to them. They are therefore very arrogant, and they have this system of being a middle kingdom and having a mandate from heaven. 1962 also has given them a sort of, or they think the mental edge which they think. Of course, we are not the same now, which the realists in China do realize this. Now the problem is another thing, अगर हम कहीं सेटल भी करते हैं तो हमारी तरफ से ये प्रॉब्लम है कि हमारी सेटल्ड पॉपुलेशन काफी आगे तक एलएसी तक है, जो कि चाइना के केस में इज नॉट द सिमिलर वन। अगर हम किसी टाइम पर बार्गेनिंग करते हैं तो वी हैव टू थिंक अबाउट दिस पॉपुलेशन ऑल्सो, वेयर एग्जैक्टली इज, हाउ डू वी रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम। नाउ
I will just finish with these two lines which are given in the yellow background, that they have, both the countries, in fact, China has sought and India has cooperated, that we have prevented the dispute from dominating our relationship with each other. We are pursuing our economic goals. In fact, 46 billion trade surplus towards China now. So we are in 23. In fact, it has increased. एंड दूसरा मेरे को ये लगता है कि चाइना जो है ये अब इंडिया के साथ अनसेटल्ड बॉर्डर्स को ही वांट्स टू यूज इट एज ए लिवरेज. नाउ ही इज extremely vulnerable in Indian Ocean, where his sea lanes of communications are going. So the peninsular India, which is extending into Indian Ocean, is it that India, along with US Navy in Indian Ocean, does not interfere with his energy flow, that he is keeping this option of these live borders alive? This is one of the theories which is being put across, that will it ever happen that he forgets and we resolve the problem and China has no leverage against India thereafter? War, is war an option? No, we've seen it with Pakistan, about three and a half wars with Pakistan. We have not resolved the problem of LC. So war, in my opinion, and in coming time, both the countries do not want. We are doing economically well. So I feel that war probably is not an option, and we have to look for and strengthen these enablers and work on the spoilers that we have listed. Thank you, Bhatia. I think that was a very exhaustive presentation which you have done on China. Certain historical facts may have gone up and down a little bit. That's okay. I think those will get corrected. There were very some issues about when a particular area was captured by uh, Zorawar, or when was Gulab Singh in power, etc. Those Gulab Singh came into power in 1946. So the agreement जो आपने रेफर किया है वो 1930 वाला, वो थोड़ा सा उसको करेक्ट करने की जरूरत है. That was a clarification given by Jan Chaturvedi. I think उसको छोड़ करके बाकी overall the presentation has been quite good. In fact, we will now start taking the question. I had selected Mr. Murthy as the lucky winner. In case if he shares his email with us, then we can share the link for him to come online and ask his or express his comments. Till he does that, if he's able to do that, we will take some questions. And the first question is coming straight from Aditya Kulshrestha. Uh, how does Indian Army handles poaching of Himalayas rhinos? I know, sir. I don't think the rhinos are prevalent that much in the Himalayas. To my best of my knowledge, they are on our part of the boundary in Assam, and they are, I think, in good safe hands. If we go to his next question, which is please compare Indian growth of drone research and quantity with Chinese drone industry. There is no comparison. The Chinese are way ahead of us as far as drone industry is concerned. But at the same time, let me tell you that the drone industry in India is also growing very rapidly. Very recently, the government of India has given incentives to five major industries which are producing drones. In fact, the Indian Army has given contract for net-centric warfare contracts of drones to Indian companies. So therefore, the Indian markets are also growing up. And in any case, we are now into an agreement with the US as far as the Predators are concerned. We already have two of them with the Navy, and we are getting for 39 odd more, which will be going to various services as per their requirement. But that is where we also had a discussion that once the theaters come up, they will be deployed in respective theaters, and then can be reused into another theater if required. So we are making a steady progress. I think we will be also able to. Of course, we are not going to achieve what the Chinese have capacity of manufacturing in the near term,
But I think in the medium term, we would also be having adequate number of drones. Then we have a question coming from Ananya. Ask, sir, since we are buying everything from everyone important, in return, we want control of Pakistan to start de-radicalization. Looks like it is our script and US and Saudi acting it out. या आई थिंक शी हर्ड माय शो एक घंटा पहले आई जस्ट मैंने एक घंटा पहले एक शो किया था 1.5 घंटे का ऑन सऊदी अरेबिया एंड इंडिया सो सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान तो उसमें ये डिस्कशन हुआ था तो आई थिंक आई विल आंसर दैट क्वेश्चन ऑल्दो इट इज नॉट रिलेटेड टू look it is not so simple as what we think that India is controlling it. Certain things happen by virtue of the global equations, you know. In Saudi Arabia enjoys a particular equation with Pakistan, which is taken advantage by both China, US, and India, right? But to say that India will be able to influence Saudi Arabia into doing things which uh, which India wants Pakistan to do it, may be very difficult. We have uh, uh, we have BK Sharma on the net. Let me add him to the stream. He is likely to give a comment, sir. Go ahead, sir. Your comment, sir. First of all, welcome to Stripe Dialogue, sir. I think he's gone. Okay, he's gone. I think he went into. Okay, we'll see that. Uh, okay, so that is the thing. Yes, India is also uh, doing these back back end diplomacy is being done. But to say that India is doing all this by itself, I think would be a very uh, optimistic statement. We are also part of the global game, right? Suffice it to say that till the time our interests are being met, I think we should be happy about it. Okay. Uh, Today, lucky. Okay. There it is again. Please explain what would be the condition if Indian boundary would expand to northern side of Himalayas from Afghanistan to Nepal to Arunachal Pradesh to Yuan so that Indian army lives be saved. I think see this is a very hypothetical question. Would we be able to expand to such levels at this stage of our nation, given our capabilities? So we will leave this question, you know, when we achieve such capabilities to really get to even achieving a portion of what you are trying to tell, Aditya. A very high, lofty aim. I agree with you, but it will take a lot of effort to really achieve this. Then we have Jan Chaturvedi, please correct history of Western area. Gulab Singh became Maharaja only in 1846. Capture of Ladakh was by Zorawar Singh in 1830. Xinjiang was captured only in 1865. Absolutely true, sir. It was Zorawar who uh, mounted the campaign both for the Tibet, that is up to Mansarovar, and also into Xinjiang. In fact, Batalik was also captured by the JNK state forces. Okay, so that was a clarification which has been given. I think Indian government should adopt of expansion policy as the saying goes, like the nation which doesn't expand will end one day. Okay, Aditya, it's your view. We, as a stated policy, have said that we are not going to be an expansionist nation, but that does not mean that we will not take what is ours, right? So whatever is ours, we will do everything possible, and we'll utilize all means available to take it under our control. Be rest assured of that. When it will be done, how it will be done, I think there are people who are working towards this. Methods are being employed by them, and all the methods available in the armory will be utilized for this kind of a things, right? Uh, I have a lucky viewer, sir, General BK Sharma. He is my guru also of the NDC, so I cannot ignore him. And welcome, sir, to Strive Dialogue, sir. And we would welcome your comment as far as
as far as today's discussions are concerned, I'm sure I'm aware that you have been watching China very, very closely. Over to you, sir. Well, Sharma sir, There if is you're somebody who is speaking, who is speaking. yes, sir. Sir, I'm Jan Dushyant, sir. I said I welcome you to the show, live show of ours. We would request your comments on today's discussion, sir, and anything which you would like to add. Yeah, I think there is something happening which is um, a very agitated speaker of ours asked, seeing distorted match with Aksai as Chinese part, I feel angry. Forgive my naivety, but as per you, what would be the realistic way to go so that they vacate this area and how to execute it? Uh, Sir, the whole aim of this presentation was we have listed out various issues. Now, what in immediate future, this is probably a tall order for us. But eventually, when we catch up on infrastructure, we develop our armed forces, we are self-dependent for our weapon and rest of the war-making equipment, then probably we can think of putting pressure on China diplomatically and ensuring that we take our part of the what is the rightfully our claim is there on Akshay chain area or for that matter any other area, that this will not happen in immediate future. Maybe mid of the century when we are able to catch up with China and economically, militarily, infrastructure wise, then probably we can think of it. Dushyant, can I speak? yes, sir, I have added you on the on the Uh, live. See, I'll be very quick. Firstly, I think it's a very good initiative to educate common people about the China border dispute. I just wanted to say that few things which I wish the presentation would have covered. Firstly, we not mention anything of 1959 claim line, which has Okay. become a bone of contention, and that vis-a-vis our, so-called a compromise line of 60 patrolling points of the China group, because the present dispute revolves around between these two reference points, right? The rest is of historical nature. Yes, sir. Then the next issue is about 23 disputes which were agreed between the two countries over the negotiations. Yes, yes, sir. Hello. You're out of communication, sir. I think your connection is getting cut, sir. Okay. I think John Sharma's connection is going off, so that is why he's unable to join us. But as and when if he comes through, we will tell him to elaborate. He's right that there were 23 disputes on which there were agreements made. Mutually get. Yes, but what has happened is that after Galwan, the entire process has got stalled, and therefore there has been no forward movement as far as these disputes which are agreed upon, and there are certain areas which are new, which have come up as a dispute, but no agreement has taken place as far as those areas are concerned. That I thought was a classified aspect, so I did not cover that, but we can do that in the future as well. I have the details with me. I deliberately had not covered those areas, the agreed upon disputed areas, and there are some areas which are not agreed upon, but we consider them as disputes. They are also in Sikkim, some of these areas. So with that, we will go to
the next question. We can't take too many because we are already gone beyond our time. But let me just see. The questions are far too many. Even achieving portion of what you are trying to tell. So देखिए, अर्थव करने की आदत दोनों में है लड़ाई. The present situation is such that we cannot negotiate with China from a position of strength. It is not really on equal terms. We need to develop infrastructure and forces to that. Absolutely right. Absolutely right. I think Hello. yes, sir. I think your connection is going off. Yeah, now can you hear me? Yes, Yeah, sir. I can hear you. Hello. We can hear you, sir. Go ahead. Yeah, so you've already commented on 23 patrolling points. Yeah. So then another extremely important point is 1890 agreement that forms Yes. the basis of China Bhutan India boundary dispute. And Correct. mind you, this is going to be a hot potato for India in times to come and therefore merits an elucidation. Yep. Because what is happening in that sanctuary and what is happening in Dokala, even Yeah. botany show even an iota of sort of a incentive to start compromising on those. It will have major strategic ramification as far as Bhutan's status as strategic buffer is concerned. Then You're we right. also should actually be talking about buffer zones and what is this their status. It's not coming through. I think, sir, your connection is going a little awry. We'll talk about that since we had kept this more into a historical perspective. So we had deliberately not gone to the current issues like the buffer zone, etc. We will be taking that on separately. Maybe we will call you for the show. So we will request you, sir, that as and when our connections improve, next time we will have you on the show as our guest, sir, on China. So with that, we will move forward. I think we move forward. Yeah. Uh, there is. I recommend China needs to withdraw to pre 2013 position and then only negotiate to commence. In the interim, we need to improve infrastructure and correct adverse economic engagement with China. That's absolutely what I had also commented upon, sir. Thank you very much. Then we have. Oh, today we are flooded with questions actually. China's space, cyber, and EW capabilities are unmatched in the Asian continent. Also, in most tech warfare domains, they are ahead of USA. Well, I would say that it's a statement of fact, but to say that in certain areas they are well ahead of USA, as far as Yes. critical technologies are concerned, see, US is still ahead, and that is one of the reasons why US is now trying to relocate its chip industry back to its own country. In fact, it has also moved people from Taiwan to start the industries in US. So we have to be careful. I think the US has also realized that if we continue to give the access to the Chinese, they will ultimately go ahead of the US. So therefore, corrective actions have been taken. That is why there are restrictions on semiconductor industry personnel going back to China. Also, these restrictions have been placed by US way back about 6 7 months back. So therefore, you will find that the Chinese will be restricted by the US as far as high-end technology is concerned, especially in the nano and the nano chips area and in semiconductors. Vijay, sir, is there the time openly talk about China occupied Ladakh and we can leverage Tibet rather than being on the Arunachal and LAC, sir? This should be the official policy rather than compromise on economy. Well, it's your view. It's your view, and maybe it's the view of many of us that we should use all the tools of leveraging the fact that Chinese should remain unstable. In my view, inward-looking China, unstable nature,
especially along its periphery, will be a good thing for us, because then he will be engaged within himself and will not probably think of going to any kind of a conflict as far as India is concerned, and we will have a much more time to us to develop economically and then develop our capabilities so that we can face the Chinese when the time comes. I'm not saying that we are not capable of facing the Chinese, but when we can be a little more stronger in terms of the other capabilities which are required for war fighting, Vijay had just mentioned, somebody had just mentioned about, yeah, Ramandeep had just mentioned about space, cyber, and EW capabilities. We have a long way to go in these areas, and as and when we develop these capabilities, I think we will be much better off. Sir, Uh, in a case, I just wanted yeah, to add that yeah, yes, all the cards that are available to us, whether one China policy we had said, we have Tibet card. I mean, after Galwan and the way they have, you know, in fact, Galwan also was a surprise. The way they have handled, we have started talking about it. Not that we are not talking about it. That was the one China policy, at least amongst the academicians and certain right quarters are def- making noise about it. definitely you have to use your leverages, and we have used Yes, it also. We don't have to tell about this in this particular forum, but when absolutely. required, it has been used, and Yes, probably it will be used in the future also. So absolutely. don't worry on that count. Okay, BK has given comment in the chat box, so let me just go to him. Yeah. Good overview, yet following pertinent issues merited elucidation. Chinese 1959 claim line, he had already spoken about it. India's assertion of right to patrol up to 65 patrolling points, this also I had mentioned. 23 uh, disputed agreed areas. Now, these specific issues, we will carry out a show. I have the details of this, and in that case, in that show, we will tell our audience exactly about what these are. What is the Chinese 1959 claim line? What is the India's assertion to patrol up to 65 patrolling points and 23 disputed areas? And thereafter we'll also cover about the the buffer zones which we are talking about, which people are talking of creating between the two nations, as far as dispute resolution is concerned, which are not acceptable to us. The suddenly the buffer zone can't be extending in kilometers. But China coining new areas like Gogra for 1890 agreement that forms the basis of China Bhutan India boundary dispute. Mind you, Bhutan border is going to be a hot potato for India in times to come. Absolutely true. I have we both have served in the same formation, General Sharma and myself. This is an area which has come up after the Doklam thing, and the Chinese are also extending into newer areas. Sorry, if you take as far as Bhutan is concerned, now they have forwarded a claim in the north as well, North Bhutan as well, and also on the boundary of our Arunachal Pradesh and Bhutan on the other side. So they have almost created three areas in Bhutan, and besides the other one which was there across the Chumbi Valley. So therefore, they have deliberately created new points of disagreement which were never there in the earlier discourse. So these are the tactics which the Chinese have adopted, and we have to be careful while negotiating with them. We will cover these in detail, but I thought that would have gone a little longer. So that is why Sikkim, we had deliberately kept it down. Thank you very much, Jan Sharma sir, and we would like to thank you for your valuable comments, sir. And good that our viewers would have benefited from what you just said, sir. As then we have therefore, merit citizen perspective on buffer zones are the currently contested LAC, right? At the currently contested LAC, this is in the news.
exactly the extent of the buffer zone what China wants and what we want. Borders with three Central Asia states from a position of strength. China has settled borders with three Central Asia states from a position of strength. Obviously, it is much more stronger than Burma, etc. So, Sir, Myanmar, which we call, that right? time, Central Asian Republic was his necessity Yeah. because So, subsequently what BRI he did, and of course, like you mentioned, yes, Central Asian no, republics are no match to him. Sir. so if you compare relative strength, then Central Asian republics are definitely much more weaker than the Chinese. So they have done that. Then serious strategically all important areas, thus strengthening. They have uh, they have ceded strategically all important glaciated areas, thus strengthening its position as upper riparian riparian state vis-a-vis flow of rivers in Central Asia, vis-a-vis Afghanistan. China has assumed uh, soft, Assimilation. soft assimilation of Wakhan Of corridor. Afghan. And Chinese are simply not interested in resolving border due to Tibet and Pak factor, perhaps given the political will due to macro geopolitical advantages. Sir, Absolutely, absolutely true, sir. We agree with whatever comments you have been giving. Wakhan corridor also they have included. In fact, they are making a road, road, although that yes. is not able to succeed beyond the Wakhan corridor when it is entering into Afghanistan because of the terrain difficulties. Sir. I don't think that route will come up. There are views on it. At the moment, Chinese are simply not interested in resolving borders due to Tibet and Pak factor. Perfectly, sir. But even if they resolve the dispute, what will be the shape of the dispute? That is the question which we have. What will be the shape of the resolution? That is the major question. Will we accept? Because if CPEC goes through in totality, I don't think the Chinese it's virtually become a tri-party agreement there, and therefore a tri-party dispute there. So therefore, negotiating in that area is going to be even more difficult. When it can be done, how it can be done is something which we have to wait for and develop our strength, and then only we can talk about it. Talk about some negotiations as far as CPEC is concerned. That Gilgit-Baltistan and that area is concerned. 10 is perhaps given the political will due to macro geopolitical advantages. Yeah, Absolutely, sir. Actually, three major reasons why this border resolution will be a problem. The factors are Tibet, China, and Pakistan. Correction, Tibet, US, and Pakistan. yeah, These are the major players. They're blaming us that we are falling into US lap. There are US has at times interest with China, business interest with China. So the Tibet goes into background. When they have strategic interest against China, then Tibet and India comes to the fore. So these are the games which which are being played, and Pakistan for us will always remain as a big factor as long as China keeps supporting Pakistan. So from our side also resolution will become that much difficult. So yes, these are the external factors, and these are they are macro geopolitical reasons for which these are being propped up. absolutely. I think we have had a very nice discussion, and General Sharma chipped in with his comments. There are certain areas which we have not covered in this, and deliberately that was more because of the time. In any case, we have crossed the 1 hour format which we have, but that doesn't matter. We will be covering all these aspects in a separate program. Viewers must realize that we have done. This is the fifth program on China in the series of various programs, Siakong villages. Then we talked about three warfare strategy. Then we talked about the current what your Tibet, and then now we were talking about the border disputes. And then we will come to the present where we will focus more as to what is happening from 2017 onwards. That is when the Doklam incident started, and thereafter what has happened. So we will be covering those issues right up to today. What is the situation, and points which have been left out and highlighted by Jan Sharma would also be part of that initiative. When Sikkim would be covered in detail,
and the 1890 agreement would be covered in detail as far as that is concerned. Thank you very much. I think we had a very nice discussion today, and with that, we would like to end our show. And Sir, with the I would like to just make a statement, sir, yeah, that in this particular presentation, the emphasis was more on border resolution, how China has resolved it, and what lessons and what we can draw from it. Rest of the thing were to explain the situation which is there. It was supposed to be very superfluous. Our aim was not to cover those areas no, in that many details. I that, that agree. There are certain that's factual okay. things, but That's okay, RK. I think there were certain gaps because in 1 hour you can't really cover everything. correct. We were going right from the history up to this, and in the next show, like I said, this is not the end of China's discourse. We're going to have 4 5 shows more. Then only we can cover China in totality. There are other aspects of China which we need to cover. So with that, thank you very much, Bhatia, and we have done a Thank you, sir. uh, for your lovely presentation. This will come in handy, and the clarifications will further educate our viewers and inform our viewers. Thank you very much.